Hello and welcome back students to lecture number 1 chapter number 1 of class 12th। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस YouTube चैनल पे। ये फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 का, दैट इज रेफर टू एज रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन, how does an organism reproduce. This is the basic lecture about the first important lecture about what is reproduction, what is lifespan, how an organism reproduce, which are the different methods of reproduction. तो अभी हम क्या क्या बात करने वाले हैं, हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है, किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, क्या क्या टेक्निक्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन होता है. So which are the tools, the different techniques, and how does an organism effectively reproduce? So that we would be looking forward. So you can concentrate here on the board that how does an organism reproduce, that we will have to understand it out. Okay. So basically the first thing that we have to understand is what is life or what is the lifespan of an organism. In class 11th class में आपने देखा था कि life क्या होता है. सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ लाइफ से, और उसके अंदर हम लोग लाइफ स्पैन, अलग अलग तरीके के रिप्रोडक्शन के प्रोसीजर्स, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं. हम स्टार्टिंग फ्रॉम लाइफ. सो सिंपली लाइफ इन द टर्म्स ऑफ chemical reactions could be defined as it is an array of biochemical reactions in which the substrates gets converted into product producing energy in the form of ATP that drives our metabolic pathways. Life है क्या? Life कुछ collections of biochemical reactions हैं जो आपस में ये बायोमोलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं. इनसे एक एनर्जी रिच बायोमोलिक्यूल बनता है, एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी बनती है, दैट इज रेफर्ड टू एज एटीपी. एंड दिस एटीपी इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू कैटलाइज अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन आवर बॉडी. All these, sum total of all these reactions constitute life. So life is actually, it is an array of biochemical reactions, an array of biochemical reactions in which the substrate molecules react, in which the substrate molecules react as these substrate molecules reacts, these produces energy currency or ATP, which drives the progression of other metabolic pathways, and these all metabolic pathways togetherly constitute life. These array of biochemical reactions that leads to the production of the energy currency of the body, and then this energy currency of the body drives the different biochemical reactions. They togetherly constitute the metabolic pathway. They togetherly constitute the life of an organism. All these reactions in between chemical compounds or molecules constitute life. We have seen in class 11th what are the characteristic features of a living organism. हमने क्लास 11th में देखा है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते थे, जिसमें से हमने देखा था ग्रोथ था, रिप्रोडक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर था. लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते because there are certain organisms which are not going to reproduce, such as in the case of viruses, such as intracellular pathogens.
दे विल रिप्रोड्यूस ओनली अंडर आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशन। हम लोगों ने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखे थे वहाँ पर क्लास 11 में, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, दैट इज रिप्रोडक्शन इन an organism. So there are different ways of reproduction, but first basically we must talk about what is a lifespan. Lifespan क्या होता है? Lifespan है क्या? Lifespan is the total time spent by an organism from its birth till its death is referred to as the lifespan of an organism. What is the lifespan? The lifespan of an organism. Lifespan of an organism. The lifespan of an organism refers to the time period. The time period from birth till death of an organism is referred to as its lifespan. Is referred to as its lifespan. The lifespan of different organisms might greatly differ from one another. हर एक organism का lifespan अलग अलग होता है, and this lifespan is not also dependent upon the size of the organism. There might be a very big organism but could have a small lifespan as compared to a small animal having a very large lifespan. लाइफ स्पैन का मतलब है जब से लेके कोई ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ है, जब से लेके उसकी डेथ होती है, उसके बीच में कितना टाइम डिफरेंस है, उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं। लाइफ स्पैन का कोई रिलेशन नहीं है उसके बॉडी साइज से। देयर इज नो रिलेशन विद बॉडी साइज। देयर इज नो रिलेशन इन बिटवीन बॉडी साइज एंड द लाइफ स्पैन of an organism. बॉडी साइज और लाइफ स्पैन के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम बात करते हैं एलिफेंट हैज अ वेरी लार्ज बॉडी साइज बट इट्स लाइफ स्पैन इज quite short as compared to the life span of a tortoise. Tortoise have a life span of 200 to 300 years. Some tortoise can effectively survive above 250 years. So they have a very large lifespan as compared to such a large organism such as elephants. Now there are organisms such as parrot, such as your Corvus splendens, the crow. They have the same type of body features, they have the same weight, they belong both to the EVs. दोनों ही बर्ड्स को बिलोंग करते हैं, दोनों के अंदर सेम वेट होता है, दोनों ही फ्लाई करते हैं, लेकिन इनका भी लाइफ स्पैन बहुत ही अल्टर्ड होता है, बहुत ही चेंज होता है। यानी कि लाइफ स्पैन किसके ऊपर डिपेंड करता है और क्या लाइफ स्पैन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरीके से लाइफ स्पैन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, लाइफ स्पैन डिपेंड करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के ऊपर। जिस ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो होंगी उसका लाइफ स्पैन लंबा होता है, जिस ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होंगी उसका लाइफ स्पैन छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, tortoise have a very large lifespan because of their sluggish life, okay, whereas other organisms do not have such a long lifespan. Although the why such organisms have some lifespan and other have a larger or smaller lifespan depends upon how effectively the chromosomes can be oriented, can be structurally maintained within the nucleus. किस तरीके से क्रोमोसोम को स्ट्रक्चरली न्यूक्लियस के अंदर मेंटेन किया जाता है, किस तरीके से क्रोमोसोम्स के एंड्स को मेंटेन किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि उसकी लाइफ स्पैन क्या होगी। इसी बात के ऊपर एलिजाबेथ युकावा को नोबेल प्राइज मिला था हमारे इंडियन साइंटिस्ट वेंकटरमन रामकृष्णन के साथ में। पढ़िएगा कभी उसे, वो रिसर्च की चीज़ें हैं, वो जिससे मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला। मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, तो ये जो वेरिएशन इन लाइफ स्पैन है दैट क्लियरली इंडिकेट although the lifespan of each and every organism can vary, but every organism has to die. देखिए, लाइफ स्पैन हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग हो सकता है। ये राइनोसोरस है और ये हमारा डॉग है, इन दोनों का लाइफ स्पैन एकदम अलग अलग है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट at one time all have to die. सबकी डेथ होनी असेंशियल है। all the organisms have to die. So what keeps these organisms in existence from one generation to another?
आप सभी जानते हैं कि दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म की डेथ होनी निश्चित है, सारे ऑर्गेनिज्म एक दिन मर जाते हैं और डेथ इज इनएविटेबल. So if death is inevitable, then what keeps the organism species alive from one generation to another? The most important factor. क्यों कैसे एक ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज जिंदा रह जाती है ऑल्दो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो चुकी होती है? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन refers to biological process in which an organism gives rise to young ones, and although the organism will die but its young ones will survive. हालांकि इस ऑर्गेनिज्म की डेथ होनी निश्चित है, ऑर्गेनिज्म की मौत हो जाएगी, लेकिन इसके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो इसके बाद में इसकी लाइफ साइकिल को चलाते रहेंगे, जिसकी वजह से आज भी हम उन ऑर्गेनिज्म को देख पा रहे हैं जो जिनके फोर फादर्स की बहुत पहले ही डेथ हो चुकी है. यानी कि रिप्रोडक्शन ही इनेबल करता है एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पीशीज को, परपेचुएशन ऑफ द स्पीशीज को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. सो every lifespan, both short or long, ends up into death. I state when there is no metabolic activity present in the body. Death is a state of stability in which there is no further metabolic activity taking place in your body. A person is said to be clinically dead when the brain of the person dies off. एक पर्सन की मौत क्लिनिकली डेड उसे जब कहा जाता है जब उसकी ब्रेन की डेथ हो जाती है, जब बॉडी के अंदर सारी रिएक्शन सीज हो जाती है, स्पेशली ब्रेन के अंदर रिएक्शंस नहीं होती, तो उस समय आप कहलाते हैं क्लिनिकली डेड. नाउ प्लीज लुक हियर. सो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हैज टू डाई वन डे. Then what keeps the species to perpetuate from one generation to another is reproduction. So species are made to perpetuate from one generation to another, from one generation to the other, through a process that is referred to as sexual reproduction. स्पीशीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे इसलिए सर्वाइव कर जाती हैं क्योंकि एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दैट इज रेफर्ड टू एज रिप्रोडक्शन. सॉरी, नॉट सेक्सुअल. इट कैन बी बोथ सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल. So species can perpetuate from one generation to the other through reproduction. Now what is reproduction? Then there are certain organisms, we would be talking about reproduction, then there are certain organisms which do not have a natural death. ऐसे भी कुछ organisms हैं जिनकी natural death नहीं होती. ऐसे कौन से organisms हैं? For example, the prokaryotes, the bacterial cells. These bacterial cells, the prokaryotes, never have a natural death because they divide by binary fission. If there is a single bacterial cell, it will divide and it will form two different bacterial cells. Okay, so अगर एक bacterial cell है तो वो divide कर जाएगा और वो बना लेगा दो अलग अलग bacterial cells. So this is considering this to be a single bacterial cell. Okay, this would be visible to you all. So this is the one bacterial cell and it divides by binary fission. Here comes the another bacterial cell. So this bacterial cell divides to form these two bacterial cells. So such type of process, every bacterial cell, for example in the case of E. coli which has a very rapid life cycle, E. coli के बारे में बात करें जिसकी बहुत ही तेज लाइफ साइकिल होती है, तो 20 मिनट में ही एक सेल से दो सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. जब एक सेल से दो सेल में वो 20 मिनट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी डेथ कहाँ हुई? उसकी डेथ होती ही नहीं है. इन बैक्टीरिया एंड इन प्रोकैरियोट्स नो नेचुरल डेथ इज प्रेजेंट. Similarly, in the case of amoeba and paramecium and certain lower eukaryotes, the protozoans, the natural death is absent because before their death could take place, they divide into their offsprings. In certain organisms, natural death is absent
as in bacteria in prokaryotes or in lower eukaryotes such as amoeba, paramecium, etc. Okay, hopefully this would be visible to you. अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हैं तो I will have to adjust it. Okay, it's visible. Okay, so what is basically reproduction? We are going to talk about reproduction. Reproduction क्या होता है reproduction? Reproduction is a biological process in which one organism give rise to different organisms. That means one organism give rise to its young ones. So we are going to talk about reproduction. So we are going to talk about reproduction. It is a biological process. It is a biological process in which an organism gives rise to its young ones. In which the organism gives rise to its young ones. So an organism producing young ones through a process that is referred to as reproduction. Now reproduction can be categorized into two different types. One is said to be the asexual reproduction, another one would be called as the sexual reproduction. Now reproduction could be categorized into asexual reproduction, or it could be categorized into sexual reproduction. Now how can we define the sexual reproduction and asexual reproduction from each other? Sexual reproduction will always involve two parents as well as the formation of gametes and their fusion. Okay, so sexual reproduction, it always involves two different parents of opposite sex and fertilization of gametes produced by them, fertilization of gametes produced by them. This is referred to as sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म होंगे, लेकिन दो अलग अलग स्पीशीज के नहीं। अरे भैया एक ही स्पीशीज का होना चाहिए, एक ही स्पीशीज का होना चाहिए। So such type of organism is going to reproduce with another organism of the same species but of the opposite sex, and then because of the fusion of gametes taking place, a new organism is being produced. It always involves two different parents of opposite sex from same species and fertilization of the gametes produced by them. Okay, so once the fertilization of gametes takes place, which is being produced by them, then such type of reproduction is said to be the sexual reproduction. So you would have studied in class 9th and 10th that there is a male, there is a female, then there is an act of sexual reproduction. This male is referred to as XY, the female is referred to as XX. Here the fertilization can take place and it could lead to the formation of a female, that is XX. This is gametes formation. So firstly let me form the gametes so that I can make you understand a bit better. This is gamete formation, X and Y. The gamete formation always occurs through a process that is referred to as meiosis. This is X and this is X. So the process that is being involved in the formation of gametes is referred to as meiosis.
This is meiosis. Okay. So whenever meiosis takes place, it leads to the formation of gametes, and the gametes fuse. XX, this is female. XY, this is male. Then XY, this is again a male. And then XX, this produces a female. This is how reproduction takes place, and this is referred to as sexual reproduction. Through meiosis, what were being produced? Gametes were being produced. And these are referred to as offsprings. Offsprings are always being produced after the act of sexual reproduction through fusion of gametes. Offspring कैसे बनते हैं? Sexual reproduction के बाद में gametes के fusion से. So these are referred to as offsprings. Okay. Now, when we are going to talk about sexual reproduction, what do you mean by sexual reproduction? In the asexual reproduction, in the case of asexual reproduction, a single parent may give rise to an offspring. Offspring produced as a without the fusion of gametes from the two different parents. Offspring produced from a single parent, and do not involve the formation of gametes, involve the fusion of gametes. देखिए यहाँ पर एक चीज समझने की है, इसके अंदर कभी भी गेमेट्स का फ्यूजन नहीं होता, इसके अंदर हमेशा गेमेट्स का फ्यूजन होता है. दुनिया में आपको क्या लगता है सबसे पहले रिप्रोडक्शन कौन सा आया होगा, सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? आप देखते हैं कुछ सिंपल से मैं आपको एग्जांपल याद कराता हूँ. ग्रासेस को आप देखते हैं जिन्हें हम रनर्स कहते हैं. ग्रासेस को रनर्स इसलिए कह देते हैं कि अगर आपने कभी गार्डनिंग की हो, देन वी प्लांट ग्रासेस एट अ सर्टेन लोकेशन. पूरा गार्डन लिया, उसके अंदर छोटी कुछ जगहों पे जाके हमने ग्रास लगा दी और फिर पूरे गार्डन में ही ग्रास ग्रो कर जाएगी. ठीक है. तो ये जो ग्रासेस होती हैं ये रनर्स की तरह हैं, पूरे गार्डन में ग्रो हो जाती हैं. ऐसे ही कुछ और ऑर्गेनिज्म के बारे में आपने सुना होगा, जिससे मैंने अभी बात की थी प्रोकैरियोट्स की. प्रोकैरियोट्स बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड कर जाते हैं. यीस्ट के अंदर बडिंग हो जाती है. देन देयर आर अदर ऑर्गेनिज्म दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ गैम्यूल्स. Gammules are being produced in certain organisms. Then eyes in the case of potato, bulbils in the case of agave, leaf buds in the case of bryophyllum. So all the different types of organisms can give rise to their progeny through the act of asexual reproduction. तो ये asexual reproduction से फायदा क्या? asexual reproduction से organism अपने offspring को large number में बना सकता है, कम समय में ज्यादा offspring बना सकता है, ज्यादा एरिया को घेर सकता है, ज्यादा तेजी से डिवाइड कर सकता है. देन इट फॉलोज asexual मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. अगर एक ऑर्गेनिज्म को नई वैरायटी बनानी है, वेरिएशंस लाने हैं, तो उसे क्या करना पड़ेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Asexual reproduction was the first method or the mode of reproduction. As you can find in the case of bacteria, asexual reproduction is there. In the case of algae, asexual reproduction is there. So in the case of lower plants and lower animals, there is asexual reproduction. So asexual reproduction was the first mode of reproduction to have evolved over the planet Earth. It led to formation of it led to the development, it led to the division of the pre-existing species to cover large areas. Asexual reproduction से क्या हुआ? जो species exist कर रही थी उसने बहुत बड़े एरिया में अपनी population को increase कर दिया. लेकिन आपको पता होगा कि किसी भी species के ज्यादा एरिया को absorb करने से, एरिया को कवर कर लेने से उस species का evolution नहीं होता. Evolution is based upon variations. Evolution उस species का होता है जिसमें variations होते हैं. आपको पता है सबसे ज्यादा इवॉल्व प्लांट स्पीशीज कौन सी है? एंजियोस्पर्म. सबसे ज्यादा इवॉल्व एनिमल स्पीशीज कौन सी है? होमो सैपियंस. होमो सैपियंस एंड एंजियोस्पर्म आर सेड टू बी द मोस्ट इवॉल्व्ड स्पीशीज ऑन द प्लैनेट अर्थ. व्हाई? बिकॉज ऑल दीज स्पीशीज फॉलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट इज बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट the offsprings produced are having
are having different variations present within itself. Sexual reproduction ही कारण है अलग अलग वेरिएशंस का. ये आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जेनेटिक्स के अंदर, जिसे मैंने अभी रोका है ताकि मैं आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से समझा सकूं. देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं गैमीट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फ्यूजन होता है और गैमीट्स बनाए जाते हैं. तो इन गैमीट्स के बनने में क्या होता है, गैमीट्स के बनने में होता है क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर के तरीके से अलग अलग तरीके के गैमीट बनते हैं, जिसकी वजह से किसी के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हाइट वाले जीन आ जाते हैं और वो लंबा हो जाता है, किसी के में डॉर्फ वाले आ जाते हैं, किसी के में कलर स्किन कलर फेयर हो जाता है, किसी का स्किन कलर डार्क हो जाता है. इस वेरिएशन की वजह से ह्यूमन स्पीशीज अलग अलग एनवायरनमेंट में अब सरवाइव कर सकती थी मच मोर बेटर एज कंपेयर टू एनी अदर स्पीशीज. So we evolved much more faster as compared to any other species. Sexual reproduction is the method of choice when the evolution of variations have to take place. Sexual reproduction एक method of choice है जब variations को होना है. अगर किसी भी species को evolve करना है तो उसको sexual reproduction develop करना ही पड़ेगा, ताकि वो ऐसे organism को बनाए जिनके अंदर अलग अलग तरीके का variations हो और वो organism different diverse environmental condition में survive कर सके. सो लेट अस राइट इट डाउन. इसलिए तो है ग्रासेस क्या आपको, घास क्या आपको मरुस्थल, रेगिस्तान या डिजर्ट में मिल जाती है? नहीं मिल पाती. ग्रासेस के अंदर वेरिएशन ही है. लेकिन ह्यूमंस तो डिजर्ट में भी सर्वाइव कर रहे हैं, ह्यूमंस पोल पे भी सर्वाइव कर रहे हैं, ह्यूमंस इक्वेटर पे भी सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने अंदर वेरिएशंस ले आए. जिन एनिमल्स स्पीशीज के अंदर वेरिएशन आ गया, प्लांट स्पीशीज के अंदर वेरिएशन आ गया, वो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस पे भी सरवाइव कर सकते हैं. जिनके अंदर वेरिएशन नहीं आया वो नहीं सरवाइव कर सकते. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मेथड टू इंक्रीज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन within a very short period of time, whereas sexual reproduction is a method to diversify the living organism. अपने आप को, स्पीशीज को डाइवर्सिफाई करने के लिए कौन सा मेथड है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. 2 पॉइंट्स नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जो मैंने समझाया वो मैं लिख भी दे रहा हूं ताकि आप और अच्छे से समझ पाए. प्लीज लुक फॉरवर्ड. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दोनों के एडवांटेज हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होते हैं. Asexual reproduction, it leads to formation of large number of offsprings or progeny in a short period of time. So is the method of choice. In case of lower prokaryotes such as bacteria and eukaryotes such as amoeba, etc. And it is the method of choice in the case of lower prokaryotes as well as in the case of eukaryotes to form large progeny in a small period of time. To form large progeny size in a small period of time. छोटे समय में लार्ज प्रोजेनी साइज आपको बनाना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम. Now when you are talking about sexual reproduction, what will happen in the case of sexual reproduction? Sexual reproduction leads to the formation of variation. Here the individuals which are being produced in the case of asexual reproduction, they are all same to each other and hence are referred to as clones. So if you can just look here, I'm just writing another point. All the members which are being produced are carbon copy to each other. All members produced, all progeny members produced are carbon copy to each other. Members produced are
carbon copy or are exact copy to each other, exact copies of each other, and so are referred to as clones. That is why they are referred to as clones. These are referred to as clones. Okay. Here, sexual reproduction. It is the method of choice. It is the method of choice. It is the method of choice when variations. What is variation? Differences. अलग अलग दिखना. When variations or differences, differences are to be introduced in a species. This produces different types of offspring. It produces different types of offspring. It produces different types of offspring. Different types of offsprings. Thus produces variation. Thus produces variations, and these variations are the substrate for the process of evolution to take place. And these variations acts as a substrate for the evolution of a species. So for the evolution of a species, these variations act as a substrate. It is these variations that lead to the evolution of a species. Evolution का raw material है variation. अगर दुनिया में evolution होना है तो variation होगा. भाई एक लंबी नेक वाला जिराफ था, एक छोटी नेक वाला, एक छोटी गर्दन वाला जिराफ, एक लंबी गर्दन वाला जिराफ. लंबी गर्दन वाला जिराफ बच गया और छोटी गर्दन वाले जिराफ की डेथ हो गई जब अकाल पड़ा. When there was a famine, then what happened? The long-necked giraffe was able to survive to feed upon the higher plant species, whereas the short-necked giraffe died off. So why the giraffe? We are able to visualize those giraffe because there was a variation in the population of giraffe. जिराफ की पॉपुलेशन में वेरिएशन था, इसीलिए लंबी गर्दन वाला जिराफ आज तक मिल रहा है, छोटी गर्दन वाले जिराफ की डेथ हो गई. तो वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. वेरिएशन नहीं होता सब जिराफ की हाइट एक जैसी होती तो एक्सटिंक्ट हो चुका होता, खत्म हो चुका होता. Variations are the key important things. Produces variation, and these variation act as a substrate for the evolution of a species. So sexual reproduction is directly proportional to variation. All higher eukaryotic organisms, including all plants, all higher plants and animals performs the act of sexual reproduction. Performs the act of sexual reproduction. They perform the act of sexual reproduction. Okay. These are the ones that will be performing the act of sexual reproduction. So now we will be talking about what is asexual reproduction, which are the different methods of asexual reproduction. Asexual reproduction होता क्या है? Asexual reproduction के कौन-कौन से methods होते हैं? So that we are going to start in our next lecture. It's just a short break that I will be taking, and in our next lecture we will be talking about the different modes of asexual reproduction. In the meantime, if you have any query, you can WhatsApp me, you can message me, you can text me, you can comment in the comment box, and I will try to answer majority of yours.
इसके अलावा भी और कुछ पूछना चाहते हो, कुछ नई रिसर्च के बारे में पूछना चाहते हो, किस तरीके से एजिंग कंट्रोल होती है, तो वो भी आप मुझसे टेक्स्ट करके व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं. आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन. So we are finishing here only. We will be starting with this asexual reproduction in our next class. And then we will be talking about the different methods of asexual reproduction. कौन-कौन से methods होते हैं asexual reproduction के? How does asexual reproduction takes place? That we will be starting. Okay, students, best of luck. Please do like, share, and subscribe to this channel so that we can keep in touch. We can keep communicating like that, and you can also share the videos with your friends. Thank you. Thanks a lot.